Welcome back. You're watching Newsx. My name is Vineet. Well, the situation in Punjab is certainly worrying and quite grim. The entire state has been hit by the worst floods in more than a decade. The estimates are that 1.75 lakh acres of farmland is submerged and destroyed. Over 40 people have perished in these tragic floods. We have seen state ministers and union ministers visit, take stock, but the priority is rescue and relief. Over 50 columns of the Indian Army have been deployed in Punjab and Jammu Pathankot as well. Well, we will be speaking with a number of important faces from Punjab, people who want to speak their hearts and their minds out as well. Sonia Maan, Punjabi actor, is with us on the broadcast. Sonia ji, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? All right, Sonia is not there with us. Samita Kaur, environmentalist and founding director of Vatruk Foundation, is also with us on the program. Samita ji, I hope you can hear me. Yes, I can hear you. Samita ji, we all have seen pictures of the devastation in Punjab, and we all know the history as well as the histrionics. Since 1988, Punjab has not felt the cruelty of nature like it has in the last few days. In terms of what the ground reality is, what do you know and what can you share with us? You see, what exactly has happened over the years is very tragic as far as degradation of land is concerned, environmental issues of Punjab are concerned. As a matter of fact, of the entire nation or of the world, we can say, but today we are going to talk about Punjab. So in that case, I would like to say that, certain projects that came up or, looking at the tree cover of Punjab, which is dismissal, which is next to nothing. So land area of Punjab is 95% of the geographical area comprises of the rural area. So imagine that 23 districts are under flooding, and there is not just the fury of the nature, which I can also say add to it. That is we can put a certain amount of blame on the citizens, but the major problem that came this year was mismanagement, water mismanagement. So the dams were filled up to the brim, and they were discharged, the water was discharged without proper flood alerts. In the villages that I visited, they said we didn't get any flood alerts. So emergency evacuation was not even taken into consideration. So these things are there, and I feel that somehow as a nation, because Punjab contributes to 31% of the food grains in terms of rice, and 14% in terms of wheat. So as a nation, we have to come forward and look at its problems. Well, there has been a lot of outpouring of support in terms of, the message of Punjab being shared across social media, as well as in terms of monetary help too. People have come forth and tried to contribute as much as possible. How is that helping people on ground? See, what actually is happening is people are coming forward individually in forms of NGOs and certain renowned people. Some of the news is coming forward, some are anonymous, but they are working. Whether it is the Hindus or the Sikhs or the Muslims of Punjab. So everybody follows by one concept that is called Sarbat da Pala Seva, Sikhi, Sidak, all these things are there. So contributing towards the common pool when somebody is not doing well, that has always been essence of Punjab. It is right in the DNA. So everybody's coming forward. That's a very positive sign. All right, Samita ji, appreciate your time and thank you so much for speaking with us. Major General SVP Singh, Strategic Affairs and Senior Defence Expert, with us on the program as well. General Singh, I hope you can hear me, sir. General Singh? Yes, I can hear you. So thank you for being here. Well, this is not an easy way to put, but it seems that there has been a lot of work done
in making sure that Punjab feeds the country, Punjab feeds the world, takes care of our bellies. But when it comes to, balancing out the ecological as well as the environmental depletion of this state, no work has been done by consecutive governments in the past. Am I right in saying that, sir? Vineet, you're bang on. You see, the point is, it is the institutional management which is failing Punjab. No doubt, the nation's fury in the form of the floods through the rivers Satluj, Byas, Ravi, they are in full spate. But yet, you see, we are not learning our lessons. Repeated floods, inundations in large areas, damage to property, human beings, livestock, and livelihoods has been rampant in Punjab. In 1988, in August, September, very major floods came in Punjab, and we are talking of that as one of the red marks, the landmark year of how to manage yourself. I was in Kargil that time, posted as a brigade major. I want to tell you that there was a complete breakdown there also. Early snowfall, the passes had closed, and we had to do a Herculean task. And just a couple of months later, I got posted in Headquarter 11 Corps on the General Staff Operations appointment. And that year, we just devoted our time how to manage the monsoon season in Punjab. Our preparation, our SOPs, our interaction with the civil administration was so refined, so intimate, intricate, that we found that we could manage it very well. And I reflect on that 37 years back, I find that things are just not moved in Punjab. And you said it, what you said in the beginning, I would say the successive governments have no doubt failed, and they have just whiled away their time where actual management is required. We know that the monsoons are a very difficult time in Punjab because we are in the catchment areas of down the hill areas, and the floods do come in these rivers, and they are in full spate. But we have still not done our bit. And yes, these floods, I would add, are because of the fragile infrastructure, weak institutional management, I said. And you see, the government relies on reactive relief measures. It's become a psyche with them rather than being proactive. We know what's going to happen. Your neighboring country, Pakistan, they had such devastated flood just a couple of years back. So those memories serve as lessons to how to overcome, because that one side Punjab and this side Punjab, the same sort of terrain, same sort of problems. So now what has happened? 4 lakh people affected, 1.7 lakh acres submerged, 1.48 lakh hectares perhaps, 23 districts, 20,000 people evacuated, 2 lakh, one fourth of Punjab, as Madam said, I would say 1/4 of Punjab is dependent on agriculture, income, and livelihood. And where it is going to stand now? Your cultivation is all washed out. Your flooding has ravaged the Mother Earth out here. And the food basket of the nation, the state which feeds the nation, ironically, because of mismanagement on the part of the government, where I would put the politicians, on the part of the government, the bureaucracy, is now this state looking for it to be fed. A state which feeds the nation now looks for the nation to feed. I mean, who is responsible? No heads rolled, lessons are not learned. Army, NDRF, BSF, all such organizations and are activated. so how is this also a wake-up call for citizens of maybe not only Punjab as a state, but citizens everywhere, that without accountability, no politician, no government is worth its salt? Absolutely. The citizens have a role to play. And I tell you, when a crisis comes, I don't think there's any country better than how the citizens rise to come to support. But it is at the time of crisis.
So we have to look inwards. We have to educate. We have to educate the people. The government has to take forward this. The government has to do it. We have got NGOs who render human services. I mean, there's so many NGOs today. They're just reaching out. The diaspora is reaching out, but that is not what the fourth largest GDP nation in the world is looking for. We are looking for our systems and our SOPs to be in place. We've got to have redundancies in our system. And that is what is lacking. You see, the structural hazards have to be arrested, have to be removed. It is very painful. You know, I have been through this in Punjab, and as I mentioned to you, in Kargil, Ladakh area in 1988, and I know what suffering is and how best to control. Who controls? It is the organizations which are there. An army is one part of that organization, of the overall 24 spokes of a bicycle. And that is where it is lacking. You see, look at the people, I mean, evacuated, they're losing lives, they're disabled people. The Chief Minister says, I look forward to rupees 50,000 per acre relief to those who have suffered. Right, he looks sir. forward to 2.5 to 5 lakhs of for the disabled to be given by the central government. They're looking forward to Right, the sir. central Right, government sir. for Right, the sir. relief. So I need to, in fact, we have a motley of guests who are joining us on the program. Kunal Sharma, president of the Guru Ramdas Seva Society, is also with us at this point in time. Kunal Sharma, I hope you can hear me. Kunal? हाँ जी सर। हाँ जी, कुणाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सभी पंजाब में जो हालात हैं, जो स्थिति है, उसको देखकर काफ़ी परेशान हैं। मंत्रियों के दौरे लग रहे हैं और केंद्र सरकार से मदद मांगी जा रही है, पर लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो इस वक्त पानी में डूब चुकी है। किसानों का नुकसान हुआ है, पशु मर चुके हैं और किसी न किसी तरह कोशिश करके लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। अभी ऑन ग्राउंड क्या स्थिति है? बारिश का प्रकोप जो है वो थम गया है, पर फिर भी थोड़ी बहुत बारिश अभी भी कई जगह पर हो रही है और बताई जा रही है। आप क्या बता सकते हैं, इस वक्त क्या गुजर रहा है पंजाब पर और पंजाबियों पर? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 2 ਜਾਂ 3 ਬੋਟ ਨੇ, ਔਰ 2-3 ਬੋਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੋਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਆਰਾਮਦਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫੀ 7-7 ਫੁੱਟ 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੋਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਕੁਛ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ NGOs ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 200 ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੋਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ 3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲ 6 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 7 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। NDRF ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25 ਘਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ राशन। कुणाल जी आप जो दुविधा बता रहे हैं कि बोट्स का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, आपने ये नहीं बताया कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है, पहले वो बताइए। NGOs जो कर रही हैं, आप जो कर रहे हैं, वो सराहनीय है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ, पर अभी सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ पे क्या हो रहा है, उनसे क्या बन पा रहा है? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਪਰਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦਾ ਫਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਹੀ NGOs ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ NGO ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। चलिए कुणाल जी, हमारे से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। All right, let me also rope in Mr. Harinder Sikka into this conversation. Of course, we're going to try and get as much clarity and opinion as we can. Harinder Singh ji, thank you so much. I hope you can hear me, sir. Yeah. All right. Well, you know, we can ask as many questions as we like. We can continue to blame this government and that government. But the only thing that one needs to be focused on is how to save lives, because even if the rains stop, the water that is not receding in itself can create major problems for Punjab as well. Who's going to tackle that, sir? First of all, you need the horses for courses. You want to win a derby, you need thoroughbreds. गधों से derby नहीं जीती जाती. The government of the day must understand that the disaster management team has failed, not only failed, it has insulted Punjab. You mean to say they did not have provisions for boats or life-saving equipments or medicines or anything? We have taken it for granted. Punjab has seen attacks of various nature, nature's attack, Mughals attacks, and British attack and Gandhi Parivar's attack. We have seen it all, suffered and emerged. But we are responsible that we are unable to put right people on the job, and whoever we have brought in has taken us for a ride. We got to understand that first of all we are responsible for it. Will this massive attack by the nature will affect us, will teach us a lesson? No. Tomorrow, when everything settles down, we'll be back to square one. Now comes to the second point, which is how we'll be able to emerge out of it. We shall emerge from it. We have in the past emerged. And how and what kind of dramatic situations you have not, I have seen
attacks on Golden Temple and riots and no, they were not called riots, they were disasters of all kinds. Lakhs of people were killed. We have emerged from those kind of things. This rain, this flooding, the houses getting washed, we will address that also, because in the end of the day, Sikhs are very, very strong when it comes to helping others. It is in our DNA thanks to our gurus. But this is a short-term solution we are all the time addressing. And the gentleman a short while ago was saying that they don't have votes. Just look at their inventory. The bureaucracy and the polity in Punjab is responsible for everything, but they are not accountable for anything. So unless and until you make somebody accountable, somebody not only responsible, pay for it, what you have done. Till that time, there will be, good old days, there was a book. So where are the bureaucrats? Where are the bureaucrats, the MLCs, the MLAs, the respective ministers who have been charged with certain territories? Where are they today? Where is the money? You see, I'm coming to that. There was a very famous book by Mr. Sai, which said that why everybody loves a drought. Change that small thing. Why everybody loves any kind of problem in a state, or flooding, or war, or whatever. These people make tons of money. Where is that money gone which was spent in infrastructure creation? Nothing. You will not find any answer. They go overseas trips for God knows what all reasons. In the end of the day, they will continue to rule and these mishaps will continue to happen. We got to wake up. Right now, the situation is as follows. We will lose some people. We will lose some dramatic. We have a dramatic situation on hand. We'll be short of wheat and various pulses and various stuff that where Punjab grows, and the farmer on the ground will be hand to mouth. I challenge you today. Tomorrow, when this settles down, nobody is even going to see their faces. 12,600 Punjab villages were drugged. You mean to say that happened without the interest of polity? You're quite right, sir. Not questioning that. You're quite right, sir. We are not questioning it because we have made money out of that. Why are Badals free? Why the money to be spent on this is not seen anywhere? Somebody should question this. Absolutely right, sir. That Sukh Mahal he has built 7-star. Whose money? The jungle has been cut. And this is what, when you cut jungles, the location that you're not supposed to touch, which is supposed to protect you from various kinds of avalanches or flooding or disasters, has been ruined. You're absolutely right, sir. So I'm going to come back to you. Mr. Lakhwinder Singh Jakhar, former DIG Prison Punjab, is also with us on the phone line. Mr. Jakhar, thank you for speaking with us, sir. I hope you can hear me. Sir, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? Okay. All right, there seems to be a problem with that connection. Let me in fact rope in Mr. Gurjeet Singh Aujla, Congress MP from Amritsar, who's joining us at this point inside. Gurjeet Singh जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सर, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? All right, there seems to be a problem with his connection. We'll have him with us momentarily, but right now we are discussing the situation, the grim situation in Punjab. I'm going to rope in Mr. Sikka once again into this conversation. Mr. Sikka, well, what happens once this problem is tided through? Are we going to in fact prosecute and punish those who are responsible, or do you think this will also be slipped under the carpet? 100% will be slipped under the carpet. All that drug business happened. Did anybody bother about it? Everybody's forgotten. During the Aam Aadmi Party, he promised tons of money for the needy. Did that happen? No. Was he involved in the bootlegging? He did.
No, we've forgotten. When comes election, the poor who are going to suffer today will be given some money here and there, and that's it. Ground reality is that these 12,600 villages, out of that a large number have suffered. They are gonna be forgotten tomorrow when that thing ends. And unless and until the people wake up, this is not going to get addressed. You're right, sir. It is. You're absolutely right. Bhai Gurcharan Singh Grewal, SGPC General Secretary, also joins us on the show. सर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो भाई गुरचरण सिंह ग्रेवाल जी, अगर आप मेरी आवाज़ बोल रहा हूँ सर, पंजाब में अभी क्या हाल है? हमने जितने भी लोगों से बातचीत की है, जो भी अभी चल रहा है, स्थिति बहुत ही गंभीर दिखाई देती है। मदद की जो गुहार है वो काफ़ी दिनों से लगाई जा रही है, पर ब्लेम किया जा रहा है, आलोचना की जा रही है केंद्र सरकार की और पंजाब के प्रशासन की। देखिए, बात ऐसी है कि ये जो आज जो क्लैमिटी हुई है, जो महामारी हो रही है, इसमें दो लोग शामिल हैं। एक तो चलो नेचर है, और दूसरा यहाँ का जो मिस मैनेजमेंट है, जो हमारा कृष्ण कुमार सेक्रेटरी है, वो उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। कोई आपसी तालमेल नहीं है, बीबीएमबी की मौसम विभाग के साथ तालमेल नहीं है, कोई कोऑपरेशन नहीं है। कितना पानी उसमें डैम में होना चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण पे ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, ये बारिश भी ज्यादा हुई है, लेकिन हम ये बताते हैं कि अगर इसको सही मैनेज किया जाता तो ये फ्लड की जो स्थिति नहीं बननी थी, थोड़ी जगह में बननी थी। अब 23 जिलों में पंजाब की जो ये हड़ के हालात हैं, ये बहुत खतरनाक है। आपको बाकी जो मेरे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, यहाँ पर पंजाब सरकार के नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ का मुख्यमंत्री वहां पर जाता है और नाटक करता है, किसी के गले लगता है, और धरती पे बैठ के एक हाथ में रोटी लेके खाकर और उसकी फोटो खिंचवा कर आ जाता है, और शाम को 5 स्टार होटल में आकर विश्राम करता है। ये पंजाब की फिक्रमंदी है। और जब पंजाब में ये बात हुई कि यहाँ केजरीवाल के नाम पर ये गुमशुदा की तलाश की बात हुई है, तो तब केजरीवाल जहां आ रहा है और सिसोदिया जहां आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पहले आपको एक एनजीओ के लड़के ने बताया था कि अगर कोई सेलिब्रिटी आता, मैं ये नहीं बोलता कि सेलिब्रिटी ना आए, वो दान ना करे, लेकिन उनकी फोटो खिंचवाने के लिए वोट दी जा रही है। जो भूखे हैं 10-10 दिन से, उनको ये काम नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये पंजाब है, पंजाब को मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन पंजाब मरेगा नहीं। पंजाब अपनी शक्ति से उठेगा। जो भी जितना भी फंडिंग हुआ है, जितना भी काम हुआ है, जितना भी राशन आया, जितना भी पशु का चारा आया, या लंगर आया, इसमें 95% जो एनजीओ है, या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, जहां कुछ बाबा जी हैं, उनकी तरफ से किया गया। सरकार बताए, सरकार के एमएलए तो ये कर रहे हैं कि कोई लोग जहां एनजीओ जो लेके जाते हैं सामान, उस पर अपना बैनर लगाते हैं और उसकी फोटो खिंचवा कर ये बोलते हैं सरकार दे रही है। कितने ट्रैक्टर ट्राली रोके गए पुलिस की तरफ से कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि आगे भगवंत मान जी, जहां कोई मिनिस्टर जो वो सर्वे कर रहे हैं। कौन सा सर्वे कर रहे हैं? 16 दिन से सर्वे हो रहा है। दूसरी तरफ से जो केंद्र के मंत्री यहां आते हैं अपना पजामा ऊपर करके, और यहां पर देखते हैं कि सर्वे कर रहे हैं। क्या सर्वे है? कभी देखा है, कभी सुना है? गुजरात में बाढ़ आई हो, बिहार में आई हो, यूपी में आई हो, वहां पर 2-2 हजार का पैकेज दिया जाता है। एक फूटी कौड़ी केंद्र सरकार ने अभी तक जारी नहीं की है। क्या उनको दिखाई नहीं देता कि 10 दिन से लोग कनेक्शन टूटा हुआ है, 8-8 फुट पानी है, उनके घर ढह रहे हैं। लेकिन मैं ये बताऊं कि सरकार नाम की कोई भी ना केंद्र है ना जो पंजाब है, इनकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई किस्त मुहैया नहीं कराएगी।
जी बिल्कुल सर, केंद्र जी दे रहा है। जी जी बिल्कुल सर, आप भावुक हैं इस पूरे मामले को लेके, मैं समझ पा रहा हूँ। एसपी सिंह ओबरॉय, सरबत द भला चैरिटेबल ट्रस्ट वर्कर्स joining us on the program. Mr. Oberoi, I hope you can hear me. जी नमस्कार जी सबको मेरा। ओबरॉय जी, हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गुरचरण सिंह ग्रेवाल काफ़ी नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि जो भी काम हुआ है पिछले 2 हफ्तों से ज़्यादा उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। केंद्र सरकार ने अभी तक कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया है, और अगर यही महामारी अगर कहीं और आई होती तो अभी तक केंद्र सरकार कुछ ना कुछ अनाउंस कर चुकी होती। जो भी केंद्र मंत्री आ रहे हैं वो सिर्फ एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आ रहे हैं। पंजाब का क्या होगा इस बीच सर? देखो ऐसा है, पिछले 4-5 दिन से मैं सभी गांव में हूं, और जब से ये मुश्किल की घड़ी आई है, तीनों डैम से पानी छोड़ा गया और काफ़ी हमारे 9-10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पानी की लपेट में हैं, और हमारी सभी टीमें जो है वो हमारी टीमें दे रही हैं, आज भी दे रही हैं। राशन की कोई कमी नहीं है यहाँ। मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं बाहर से कि हम राशन दे रहे हैं, तो ये हाथ जोड़ते हैं कि राशन नहीं चाहिए अपने को। यहाँ हमारे जो संत समाज हैं, गुरुद्वाराज हैं, श्रोमणी कमेटी है, और सबसे बड़ी बात है कि पंजाबी ही पंजाबियों का जो हाथ पकड़ रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है अपने को। इतना राशन आ रहा है, इतना राशन आ रहा है। सिर्फ अगर प्रॉब्लम आ रही सिर्फ तो वो चारे की आ रही थी पशुओं को, क्योंकि लाखों की गिनती में जो पशु हैं हमारे, जो जबान से बोल नहीं सकते, सो उनका दुख नहीं देखा जा रहा था। तो उसके लिए हमारे तो लगातार तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि 50-60 टन 100 टन जो हमारा राशन है, चारा है पशुओं का, वो जा रहा है उधर। और आज मैं कह सकता हूँ जितने दिन में सारे घूम कर आया हूँ, अभी पानी सब तरफ से उतर गया है, कोई खतरे की बात नहीं है अभी। अभी जो खतरा हमारे को नज़र आ रहा है वो ये है कि जैसे ही पानी उतरेगा उस टाइम मच्छर भी पैदा होना है, क्योंकि स्टिल वाटर हो जाएगा, मच्छरों से बीमारी चलनी है, और इतने पशु अंदर अपने मरे हुए मिलेंगे जिनका उसका पहले तो सबका उनका बॉडी बाहर निकाल कर करना पड़ेगा, बीमारी तो फैलेगी। सो मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी उस टाइम। अभी जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ भी नहीं चाहिए। बारिश भी थम गई है, लेकिन तरपालों की जरूरत थी, तरपाल हम पूरी कर रहे हैं। और भी जो को देना चाहता तरपाल दे। राशन कोई ना भेजो यहाँ, राशन की बिल्कुल कमी नहीं है, और चारे की बहुत ज़रूरत है। चारा हमारा कई टन लगना चारा, और मेरी तरफ से हमने अपनी ट्रस्ट की तरफ से कम 1600 टन चारा जो है वो अभी भी हमारे स्टॉक में है। हम लगातार भेज रहे हैं। हमारे 8-10 जो बड़े जो ट्रेलर हैं जिसमें 20 टन आता है, सो वो हमारे कंटिन्यूसली हमारे फिरोजपुर में भी जा रहे हैं, मोगा में भी जा रहे हैं, तो तरन तारण जा रहा है, पट्टी जा रहा है, अजनाला साइड में जा रहे हैं। और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ की रावी ने बहुत नुकसान किया है, वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज जो है पानी कल से कम होना शुरू हो गया है। आज पानी काफ़ी कम है, नज़र आ रहा है कि पानी उतर रहा है। जहाँ बोट चलती थी, जाते थे, अभी बोट भी वहाँ नहीं चल पा रही, क्योंकि पानी का स्तर जो है, बोट चलती है 6 फीट के पानी में, अभी पानी नीचे होकर 3.5-4 फीट आ गया, बोट भी नहीं वहाँ चल रही। लेकिन लोग सारे सुरक्षित हैं, कोई ऐसा इतना नुकसान नहीं हुआ। लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया था। अभी अगर हम मोगा की बात करें तो मोगा में हमने गांव के गांव खाली करा लिए थे, और बाहर स्कूलों में उनको शरण दी हुई है, और वहाँ उनको हम राशन सप्लाई कर रहे हैं। सो ऐसी कोई कमी नहीं है। बाकी दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी ये जो टाइम है ना, ये किसी को ब्लेम देने का नहीं है, चाहे सेंटर सरकार हो चाहे पंजाब सरकार हो। अभी ये हमारा कि हम आपस में मिलकर जो सेवा कर सकते हैं, जैसे उनको बचा सकते हैं बचाएं। अभी देखो जितने हमारे जो बंद थे ना, बंद टूट रहे थे, खतरे का था, वहाँ जितने हमारे साधु संत महात्मा है, उन्होंने अपने सारी सेवा लुआई हुई है। लाखों की गिनती में वहाँ जो है हमारे बोरे पड़े हुए हैं, ट्रालियाँ लगी हुई हैं, धड़ाधड़ मिट्टी आ रही है, और रातों रात मतलब कि 24 घंटे यहाँ काम चल रहा है। और ये काम करके इन्होंने सब कुछ बचा लिया है। काफ़ी नुकसान काफ़ी हुआ है। अभी ये बड़े डीजे इसलिए हमें कि जो आगे क्या होगा। सिर्फ इतना ही नहीं है कि बीमारी फैलेगी, उसके बाद जितने लोग बेघर हो गए हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं रहा, तो उनके रहन सहन का इंतजाम करना। जी सर, जी सर, जी सर। हमारे साथ इस वक्त अशोक मस्ती भी हैं, पंजाबी सिंगर। अशोक, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल अशोक। क्या कहना चाहेंगे आप पंजाब की स्थिति को देखकर? हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की है, आज की है, कल की है, कुछ दिनों से करते ही आ रहे हैं। कुछ लोग प्रशासन की गलती मान रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस बार बारिश का भी प्रकोप हुआ है, इसमें किसी की गलती नहीं है। आपका क्या मानना है?
देखिए, पहली तो बात मैं बताऊंगा कि इस वक्त ये बहुत मुश्किल की घड़ी है। इस वक्त ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। और वैसे भी पंजाब चढ़ती कला की निशानी है, और पंजाब में मैं हैरान हूं देख के, इतना खुशी खुशी हो रही है इसमें मुझे इस बात की कि इस पूरे हड़ ने, इन प्रकोप ने सब लोगों को इकट्ठा कर दिया है। और सब अपनी अपनी जो जितनी भी समाज सेवा संस्थान हैं, डेरे हैं, जो जितने भी खालसा एड है या तेरा तेरा यूनिट है, या जितने भी लोग पंजाब से जुड़े हुए हैं, जिनको पंजाब का दर्द है, वो मतलब कि जितनी हेल्प चाहिए उससे ज्यादा लेके पहुंच रहे हैं। जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे पास राशन की कमी नहीं है, हमारे पास मेडिसिन की अभी कमी नहीं है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ताकि थोड़ा पानी नीचे उतरे, और फिर उसके बाद हमारी असल जंग शुरू होगी कि जिन जिन के घर बह गए हैं उनको हमने किस तरीके से रीबिल्ड करना है, और जो स्कूल्स भी डूब गए हैं उनको रीबिल्ड करना होगा। तो अभी ये जंग थोड़ी लंबी चलेगी, बट इस वक्त मैं यही कहूंगा कि हम सब मिलजुल के पंजाब के साथ, पूरा विश्व खड़ा है, उसका एक कारण है कि पंजाब जब भी दुनिया में कहीं भी, हिंदुस्तान में स्पेशली कभी प्रॉब्लम आई है तो पंजाब सबसे पहले जाके हेल्प करता है। चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो मेडिकल की बात हो, चाहे वो किसी और एड की बात हो, पंजाबी सब 5 मिनट में वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर मुसीबत होती है। तो इस वक्त पूरा हिंदुस्तान पंजाब के साथ है। बेशक मैं मानता हूं कि शायद सेंटर की वजह से या पंजाब सरकार की वजह रवैये से लोगों के में रोष है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वक्त अभी किसी को ब्लेम करने का नहीं, अभी आगे काम करने का है ताकि पंजाब को वापस उभारा जा सके, और इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब वापस बहुत जल्दी खड़ा होगा। अशोक, मुझे बताया गया कि आपने पंजाब के जो हालात हैं, ये पूरी सिचुएशन पर कुछ कंपोज भी किया है, कुछ लिखा भी है। अगर आप माइंड ना करें तो हमारे दर्शकों को वो आप सुनाना चाहेंगे? जी जी जी, मैंने अभी आज ही एक गीत जो है पंजाब के फ्लड से जो इफेक्टेड चीजें हैं उसके लिए मैंने ये बनाया है। मैंने रिलीज भी किया है आज ही। रिलीज तो क्या, वैसे सोशल उसके लिए ही है, ये जी, सोशल कॉज है। डॉक्टर केवल अरोड़ा जी ने ये लिखा और मेरा कंपोज किया, और मैं ही आज ये मैं गुनगुना रहा हूँ जहां भी जाता हूँ। मेरी कोशिश होती है थोड़ा मोटिवेशन मिले सब। बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ा उत्ते हो गई कुदरत पहला करो, ऊपरों गिरे पहाड़ ने हो गए शहर आलो, बदल फटे मी बरसे जोर वगे दरिया, मच्ची हाहाकार है हड़ गए पुल तेरा, सतलुज रावी ब्यास ते किते कग्गर चढ़िया, जापे जिमें पंजाब ते आ लश्कर चढ़िया, खड़ियां फसलां डुबियां हड़ गए पशु मनुख, डुब गए घर-बार ने रुड़ गए लखां रुख, वसदे लोक ने उजड़े पर लो गई ज्यों आ, पिंडी शहरी वड़ गए मल्लो जोरी दरिया, बेशक लंगर ला दिते पर आफत पारी, भाईचारे भी आन के जावे दुख सवार निवारी, हे परम पिता परमात्मा परम पिता परमात्मा दर तेरे अरदास, नजर मेहर दी कर दियो सानू होर ना किधरों आस, नजर मेहर दी कर दियो सानू होर ना किधरों आस। अशोक, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा है आपने, जो पंजाब की स्थिति और पंजाब की जो एक स्पिरिट है उसको जागरूक करता है। जैसा आपने कहा कि चढ़दियाँ कला एक पंजाब का एक मोटो है, और उसी की वजह से आज पंजाब में और पंजाबियों में ये रेजिलियंस देखने को मिल रहा है। अशोक, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Mr. Lakhminder Singh Jakar, former DIG Prison, Punjab, is also with us on the program. Mr. Jakar, thank you so much, sir, for speaking with us. I hope you can hear me. Yes, I can hear you. Very good evening to everybody. Good evening, sir. Sir, what do you make of what's happened in Punjab? We have heard a number of opinions and points. The rain has stopped, but we are being told the trouble has just begun. Yes, that is true. See, I couldn't hear what the other panelists say, so maybe I repeat some of the points. Please do bear with me. So, firstly, every river or a dam has a catchment area. And then from that catchment area and weather reports are coming in. So we know exactly how much rain is going to come in, how much of water will come in, and how much has to be stored in the dam, and how much has to be released downstream. Everything has been set in the protocols. Now, where is the problem? Sir, Punjab is a riparian state. And then there are other beneficiary states who are, which are Delhi and Rajasthan and Haryana. Now, Punjab is the main stakeholder, being the riparian state, and we are out of the management. Secondly, release of water, storage is okay. Release of water, we have to take consent from the other states, how much water we are going to release. They did not give their consent in time. So water was collected. Later on, when the situation worsened, then they said, okay, release water. Consent was given. Water was released. But then Rajasthan in particular has written to Punjab government not to release water in their canals. Why? Because they have to later on clean the canals and very trivial issues. One side Punjab is drowning. Second side, you don't want to clean your canals after the floods. This is like leaving a state in distress. Sir, we are taking the benefits. We have to bear some losses also if we are there in the same game. If we are players of the same game, we have to bear the losses also. Now, if the consents were given in time and protocols were maintained as it has to be, they were adhered to properly, then this problem could have been reduced, because the water capacity of the rivers is like 2 lakhs cubic. The carriage water downstream that can flow in a river is up to 2 lakhs. Problem is that additional 1 lakh cubic, and that is the problem. 50,000 could have been gone to Rajasthan and Haryana. They have closed their canals. Why? Will they only take the benefits, right? The benefits and not bear the losses? Is this how a brother state being treated? This is not the way, sir. Punjab is also the part of the nation, and a very important part. We are the breadbasket of the country on one hand, and secondly, we are the war zone of the nation. Every war has been fought on the soil of Punjab from prehistoric times. And in future also the situation will be same. Can we leave a state of such importance in such a bad situation? Sir, I hope, now secondly, sir, I have heard officers, very responsible retired officers, talking about that dams will be used as hydrogen bombs against a nation, other enemy nation, which they call. Sir, before the water reaches there and they are destroyed by the hydro bomb, Punjab is bearing that problem. Punjab is already facing that. Punjab will be the first to be destroyed. Later on, they may or may not be destroyed by your hydrogen bomb concept. This is very shameful when a very senior army officer, he
maintains its channels and talks like this. These type of comments should be discouraged. So You're right, sir. Thank you so much, sir, for speaking with us. Appreciate your time. Well, my colleague has filed this ground report as well from Pathankot. Let's have a look at that. We'll be back. इंडिया न्यूज़ की टीम आज पहुंची है पठानकोट में और पठानकोट के हालातों के बारे में आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से लगातार जो थी पठानकोट में बारिश देखने को मिल रही थी, जिसके बाद एक बार फिर से जो था बाढ़ का खतरा जितने भी गांव हैं पठानकोट ज़िले के साथ लगते हैं वहां पर फिर से लोगों को जो है बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था। किंतु आज सुबह से ही जो है मौसम खुशहाल है और सुबह से ही धूप जो खिलनी जो है शुरू हो चुकी है, जिसके बाद लोगों को थोड़ा सा लोगों के मन में थोड़ी सी खुशी की लहर देखने को मिली है। तो आप बता दें कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो बारिश हुई थी कल, उसके कारण जो पठानकोट के ढांगू पीर में एक पहाड़ था वो भी पूरी तरह से लैंडस्लाइड की वजह से सारा का सारा नीचे आ गया, जिससे रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अब तक जो है बाढ़ से मरने वालों की संख्या जो है 39 तक पहुंच चुकी है। अगर बात करें तो होशियारपुर में जो है सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी जो है 7 लोगों की हुई है। और बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट में अब तक कुल 6 लोग जो है इस बाढ़ की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। वही बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट में जो है 3 लोग अभी तक जो है लापता बताए जा रहे हैं। अगर बात करें पूरे पंजाब की, तो पंजाब में इस समय जो है कुल 1698 गांव जो है इस बाढ़ की से जो है प्रभावित हुए हैं और 3,80,244 लोग हैं जो है इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। तो अगर कुल बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में इस समय जो है 1.5 लाख हेक्टेयर जो भूमि है जो इस बाढ़ की चपेट में आई है, जिसके बाद लगातार जो है केंद्र सरकार की टीमें और पंजाब सरकार के मंत्री और अलग अलग विभागों के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लगातार ग्राउंड में जाकर जिन जिन लोगों की ज़मीनें जो है प्रभावित हुई है या जिनके घरों का नुकसान पहुंचा है उनका डाटा जो है कलेक्ट किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में पंजाब सरकार की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाए। वही बात करें आज की, तो आज जो है पठानकोट में नायब सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो भी 3 बजे के करीब जो है पठानकोट में पहुंचेंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी शायद दौरा कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पठानकोट से जो विधायक अश्विनी शर्मा और पंजाब के कार्यकारिणी प्रधान हैं उनके बड़े भाई की जो पिछले दिन डेथ हो चुकी थी, उसके बाद जो है आज हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है पठानकोट में उनके निवास पे भी जाएंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी करेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए वरुण कुमार, पठानकोट। Varun, my colleague, is joining us from Pathankot to further tell us what's happening at this point in time. Varun, आपकी रिपोर्ट से जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी झलक तो दिखी, पर इस वक्त प्रशासन को सबसे बड़ी चिंता क्या है? हमने लोगों से बात की, तरह तरह के विषयों पर बात करी। खाने पीने और चारे में कोई कमी नहीं बताई जा रही है, सिर्फ कमी बताई जा रही है तो वो है बोट्स को लेकर, कोऑर्डिनेशन को लेकर और शायद इस बात को भी लेकर कि अगर लोग बीमार पड़ते हैं इस पानी की वजह से उनको कहाँ ले जाए। जी आपको बता दिया जाए कि इस वक्त जो है प्रशासन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है हेल्थ को लेकर, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ये बाढ़ की चपेट में लोग आकर इससे जो प्रभावित हुए हैं उनको अब स्किन के रिलेटेड जो है इश्यूज जो है वो क्रिएट होंगे, तो उसके लेकर जो है प्रशासन की तरफ से लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट से बातचीत करके और टीमें गठित करके गांव-गांव में भेजा जा रहा है, ताकि जो लोग इस बाढ़ की चपेट में आए हैं वो किसी की तरह की बीमारी उनको छू ना सके। इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार टीमें बनाकर अलग अलग गाँव में जाकर लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है और उनको कुछ मेडिसिन और ट्यूब्स दी जा रही है ताकि फंगल इन्फेक्शन जो है ज़्यादा ना फैले। वरुण, ये भी बताइए कि अभी बारिश तो रुक गई है, पानी के स्तर को लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका क्या कहना है? आपको बता दीजिए कि पिछले 24 घंटे जो कल का दिन बीता है, पिछले 24 घंटे लगातार पठानकोट में बारिश का जो था असर देखने को मिल रहा था। आज सुबह से जो है मौसम खुशहाल है, धूप निकली थी। हाँ, अगर बात करें पहाड़ी इलाकों की, जैसे हिमाचल में जो बारिश हो रही है तो उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में देखने को मिलता है, क्योंकि जितना भी हिमाचल में जो बारिश होती है उसका पानी जो पठानकोट के रंजीत सागर डैम में आता है, उसके बाद रंजीत सागर डैम की जो फ्लड गेट खोल के जो है रावी दरिया में जो पानी छोड़ा जाता है।
तो अभी बता दिया जाए कि पठानकोट का जो रंजीत सागर डैम है उसके पानी का लेवल जो है आज तो अपने खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है। अगर फिर भी बारिश नहीं रुकती पहाड़ों पर या लगातार बारिश फिर से होती है पठानकोट में, तो लोगों को फिर से जो है बाढ़ का खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि डैम से लगातार जो है अभी भी पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जो रंजीत सागर डैम के कंट्रोल रूम पर अधिकारी बैठे हैं, उनका कहना है कि जब तक पानी का लेवल 524 मीटर तक नहीं पहुंच सकता तब तक रोजाना 30,000 50,000 क्यूसेक पानी जो है रावी दरिया में छोड़ा जा सकता है। वरुण, लोगों ने शुरू में शिकायत की थी कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आई, क्या वो एक नज़रिया है जो अभी बदला है? नहीं, फिलहाल अभी तक तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी जो है मदद नहीं आई है। बीते दिन पंजाब के गवर्नर गुलाब सिंह कटारिया की तरफ से भी जो है पठानकोट के बाढ़ प्रभावित एरिया का दौरा किया गया था। उसके बाद अमृतसर में कल जो शिवराज चौहान जो कृषि मंत्री थे, उनको जो है जिन जिन एरियो में जो फ्लड से लोग इफेक्ट हुए हैं, जहाँ जहाँ पर ज़मीनें जो कृषि जो नुकसान हुए हैं, उसकी एक डाटा जो है कृषि मंत्री शिवराज चौहान को दिया गया था गवर्नर की तरफ से, ताकि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जो है फंड जारी किया जा सके। वही सीएम की तरफ से भगवंत मान हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन दैट नोट, विल बी राइट बैक।